नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गुजरात बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां शहर के नारोल में सामान्य बात को लेकर दोस्त ने ही कर दी हत्या, और दिखाएंगे अहमदाबाद में कैसे साइबर अपराध शाखा ने 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद शहर के नारौल में एक दोस्त ने सामान्य बात को लेकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। कल देर रात रंगोली नगर के पास खुले मैदान में ध्रुवेंद्र सिंह रजावत की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि हत्यारा मृतक का दोस्त रवि उर्फ बापू अमरताई बोराना था। आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि पिछले सप्ताह मृतक ने उसे पीटा था, जिसके बाद उसे डर था कि मृतक उसे मार डालेगा। इस डर के कारण आरोपी ने तलवार छिपाकर हत्या की योजना बनाई और मौका मिलते ही उसे अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गई काले साँजना 8 वाग्याना सुमारे नारोल पोस्टना रंगोली नगर विस्ताરની બાજુમાં ટોરેન્ટની ઓફિસ પાસે આવેલા ગ્રાઉન્ડમાં ધ્રુવેન્દ્રસિંહ સન ઓફ રાજાસિંહ રાજાવતની હત્યા થઈ, જે અનુસંધાને તાત્કાલિક ડીસીપી સાહેબ અને એસીપી સાહેબની સૂચનાથી અલગ અલગ ટીમો બનાવી આરોપી પકડી પાડવામાં આવ્યો। આરોપીનું નામ છે રવિ ઉર્ફે બાપુ અમરતભાઈ બોરાણા। આ બંને મિત્રો હતા। આરોપી અને મરણ જનાર બંને મિત્રો હતા અને એક અઠવાડિયા પહેલા બંને વચ્ચે બોલાચાલી ઝઘડો થયેલો, જેની અદાવત રાખી આરોપીએ મરણ જનારની હત્યા કરેલ છે। અગાઉ બંને મિત્રો જ હતા, પરંતુ અઠવાડિયા અગાઉ જે બંને વચ્ચે બોલાચાલી ઝઘડો થયેલો, તે અનુસંધાને આરોપીને ડર હતો કે જો આને હું જીવતો રાખીશ તો એ મને અથવા મારા બાળકોને મારી નાખશે। હત્યા આરોપીએ તલવારથી કરી છે અને અસંખ્ય ઘા શરીરે, હાથ ઉપર, મોઢા ઉપર અસંખ્ય ઘા કરેલા છે। આરોપી છે આરોપી રવિ ઉર્ફે બાપુ, કે જે છૂટક ફેબ્રિકેશનનો ધંધો કરે છે, તેના ઉપર અગાઉ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનમાં મારામારીનો ગુનો પણ નોંધાયેલ છે। તેમજ જે મરણ જનાર છે તે છૂટક મજૂરીથી કંપનીમાં નોકરી કરે છે। આ મિત્રો હતા બધા, અને મિત્રો અવારનવાર એ ગ્રાઉન્ડમાં મળતા હતા અને ગ્રાઉન્ડમાં જ સાથે બેઠેલા હતા અને બોલાચાલીમાં એ દિવસે ઝઘડો થયો। હત્યાના દિવસે પણ બંને ત્યાં ગ્રાઉન્ડમાં જ હતા। હથિયાર એને અગાઉથી ત્યાં રાખતો તો ગ્રાઉન્ડમાં સંતાડેલું હતું। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी ने एक अस्पताल के चेकअप रूम में इलाज कर रही महिला मरीज का वीडियो पोस्ट किया था और इसे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनलों पर वायरल कर दिया था। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।